Hey, it's your poker guy, and I'm again, of course, very happy for a new podcast. I had met him in IPC Nepal, spoke to him, काफी ज़्यादा बात की थी, and super humble, down to earth person, and very happy to discuss sports with someone like me. So I was like, अच्छा चलो सही है, like he's actually talking, and बहुत बार he's encouraged me also with my content ho या फिर even with my play ho. So and today we'll just discover a lot about him. We've got Saransh Garg on the podcast. Terror Gandhi is one of the Hi, usernames which I know. What's up, bhai? hi, Part. Thank you. First of all, thanks a lot for taking me here. And yeah, so I'm really delighted to. I think I'm doing this for the first time, and I'm very happy to do it. And there are so I my first reaction when you asked me to do this was, "Ki why me?" There are Yeah. lot many people who know more than me, so why me? But yeah, you told me that what you are looking for is not professional advice. You are looking for relatable advice. So I'm Correct. happy to share whatever you are looking for. एंड भाई मैं प्रोफेशनल में तो आपका नाम प्रोफेशनल एडवाइस में आ गया है. मैं बोल रहा हूँ कि क्लैरिटी आपके पास बहुत सही है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक, बिकॉज अभी इसके पहले भी अपन ऑफ टॉपिक भी एक दो बातें डिस्कस की, तो इट्स ऑलवेज व्हाट जो लोग स्प्यू करते हैं आप वो नहीं करते. विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन दिस थिंग टुडे. बट ओरिजिनली सारांश इज बेस्ड आउट ऑफ जबलपुर, एंड आप फिर व्हेन आई मेट यू तभी आप मुंबई में थे Yeah. मई में, एंड यू वर लिविंग हियर, एंड आप काम कर जॉब पे अभी तो नहीं थे, बट यू वर वर्किंग इन मुंबई. इज दैट हाउ यू केम टू मुंबई? Yeah, so I was working with Godrej Consumer Products in Okay. Victoria. So I was living in Mumbai. I quit my job in December last year, December. and 1st January 2022, so I was a full-time poker player, हाँ. and I was pursuing poker from Mumbai only from the last 10-11 months, and I moved back to Jabalpur last month itself. ऑसम. तो ये वापस जबलपुर गए हैं. मैं आप 1 Jan 2022 से आपका रेजोल्यूशन था कि 1 Jan से मैं पोकर में जा रहा हूँ फुल टाइम, कि कैसे वो कैसे शिफ्ट क्या कैसे किया? So बहुत टाइम से आई थिंक इट हैपेंस विद मेनी पोकर प्लेयर्स. बहुत टाइम से दिमाग में था कि जॉब क्विट करके मुझे पोकर परस्यू करना है, बिकॉज व्हेन यू प्ले पोकर व्हाइल डूइंग योर जॉब, आपका मेंटल स्टेट इतना हेल्दी नहीं रहता कि आप अपना 100% बेस्ट दे पाओ. मोर ओवर, I started playing. I started studying from June 2020. So एक साल लगभग हो गया था ये करते हुए. I had two more friends with me. So I felt कि मेरा गेम इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और उसके लिए मुझे फुल टाइम देना पड़ेगा. एंड वो करने के लिए आई हैव टू क्विट माय जॉब. सो वो जो एक साल का पीरियड था, दैट हेल्प मी रियलाइज कि आई कैन डू दिस फुल टाइम. आफ्टर प्लेइंग फॉर 1 year, it gave me enough confidence that I can do it full time. I don't need a job to sustain my poker career. And moreover, if I have to improve, if I want to improve, I have to study, and that can only be done once I quit my job. Got it. Yeah, so major last and the most obvious problem was convincing my family. So that I think I'm sure you might have heard it a lot. Kyunki I was working with so I A did big my brand. engineering MBA, then I was working with Godrej. So it was difficult to convince my family, but uh, it so happened the day I quit my job, I didn't even know by at 11 a.m. that I'm going to quit my job today. So Oh, really? yeah, so I was talking to How my did? boss, yeah, who was super chill, who was very he was my boss in Godrej, but he was very Okay. friendly at the same time, who gave me good advice. So I Sure. was talking to him, and he told me that you should quit your job and do this, because that is something that you like. I would have done the same, and I was motivated and frustrated at the same time. हाँ. uh, by chance my mom was there nearby. I was so uh, I lashed out at her that I don't want to do this job, and I want to try this and not lot. And to my surprise, and after hearing me rant for half an hour, she was like, "I'm okay with it. Just talk to dad." क्या बात And है? I was like, "I'll talk to dad, but I'll take my time and all." But coincidentally, dad also walked in at the same time, around 2:33, and same process. I rant. I had a huge rant for half an hour. I want to do this. I don't want to work. I want to try this. What's the worst scenario? I can go to my job again, right? So he also was convinced. So I was very surprised and astonished that what is happening. So I told both of them that I'm going outside right now and calling my boss and quitting. Are you sure? They're like, yeah, we are sure. Are you sure? So I was sure, and so during
post 15 minutes, I formulated what I want to do and I put my resignation. So वाओ, it was yeah, it was very sudden. सही है दोनों रखते हैं। Okay. तो हाँ वो बेटर रहेगा। ओके, अरे क्रेजी। तो मुझे ये बोलो कि जॉब के साथ साथ यू सेड इट वाज डिफिकल्ट और तकलीफ हो रही थी ये वो, क्या व्हाट इज द थिंग दैट अ वर्किंग प्रोफेशनल इज फेसिंग कि यार पोकर साथ में खेलने में क्या तकलीफ है? मतलब वही सिमिलर कि लेट नाइट ग्राइंड करो, सुबह ऑफिस है, क्या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो आपको फेस हुआ? So I feel कि poker as a profession is not just about how good you are at the game. It is a big function of how mentally sound you are for large durations of time. For example, if you अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, जिसमें एक्स एक्सिस में टाइम फ्रेम है और वाई एक्सिस में आपका मेंटल कैपेसिटी है, तो पीपल डोंट, मतलब आई फील कि 8 बजे आपका मेंटल कैपेसिटी हाई रहता है पोकर में जब चालू करेक्ट, करते हैं, ठीक करेक्ट। है। एक 9:30 तक मेरे को लगता है थोड़ा एक डिप आता है, क्योंकि हाँ, मोनोटनी आती है, बहुत सारे टेबल रहते हैं, थोड़ा थकान होता है। 9:30, 10, 11 तक, फिर 11 थोड़ा नीचे रहता है। फिर वो 11 के आसपास वापस जब लेट रजिस्ट्रेशन खत्म लेट होता है खत्म IPF, होता है। तो फिर वापस पीक होने लगता है, क्योंकि टेबल्स कम होती है, आपको ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है, फिर पीक होने लगता है। फिर अराउंड 2-2:30 मुझे लगता है अगर टेबल चल जाता है तो थोड़ा नींद वाला वो आता है। तो ये एक जनरल साइकिल बता रहा हूँ मैं आपको पोकर दिन की। लेकिन जब आप जॉब कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक टायर्ड माइंड से खेल रहे हो, राइट। सम डेज यू आर वर्किंग, आप जल्दी 5 बजे फ्री हो जाओगे, 6 बजे फ्री हो जाओगे, फ्रेश हो गए, आप पोकर खेलोगे, यू विल डू फाइन। बट सम डेज आपको आपको प्रोजेक्ट होगा 8:30, 9, 8 बजे, 8 PM खत्म हो रहा होगा, 7:30 खत्म हो रहा होगा, लेकिन आपको पोकर भी खेलना है। तो देन आप मेंटली एग्जॉस्ट करोगे, दोनों चीजें आप करोगे, एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज कि पोकर आपको कैसे खराब हो रहा होगा, क्योंकि पोकर इज अ वेरी टिल्टिंग गेम, राइट। तो आप पोकर खेल रहे हो, आपको लग रहा है आप सही खेल रहे हो, डिसीजन खराब नहीं ले रहे, लेकिन एक खराब डिसीजन से आपको कुछ इफेक्ट हो पूरा गया, एंड हो जाता है, राइट। फिर वो स्पिल करता है बाकी गेम्स में आपके। सो दैट इज हाउ। ऑल्सो आपके पास रिव्यू करने का टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जॉब करते करते आप पोकर खेल रहे हो, आपका हम्म। खराब चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप बहुत ज्यादा खुद को ब्लेम करने लगते हो कि आप अच्छा नहीं खेल रहे हो, राइट। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप उस दिन हैंड हिस्ट्री खोलते हैं अपना एक दिन पहले का, आप रिव्यू करते हैं, आपको रियलाइज होता कि यार मैं तो सारे डिसीजन सही ले रहा हूँ, उस दिन मेरा वेरियंस था, टिल्ट, मतलब मैंने खराब नहीं खेला, लक साथ नहीं था उस दिन, राइट, वेरियंस का रिजल्ट था, तो करेक्ट, आप करेक्ट। इक्वल हो गए, आपका वो दिन इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, आप रिव्यू कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप फील बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हो। अंडरस्टूड, परफेक्ट। आई गेट इट। सो ये था आपका दिस थिंग एंड आपने डिसाइड किया, यू मूव्ड आउट ऑफ इट। मुझे ये बताओ, सो बिफोर दैट गाइस आप लोग को बोल दूं कि सारांश हैज हिज मैथ एकदम सॉर्टेड। तो आपने ऑलरेडी एक्स और वाई ग्राफ का सुन लिया है, तो दिस इज जस्ट द स्टार्ट। आपको और ज्यादा मैथ्स की बातें मिलेगी इस पॉडकास्ट में विद सारांश। सो देन यू नाउ आर बैक इन जबलपुर। सो आप मुंबई में यू स्टेड हियर, हाउ, why have you decided to go back to Jabalpur? Isn't it better कि अगर आप यहाँ मुंबई में हो, would it support your poker career in a better way कि आप पोकर प्लेयर्स के साथ रहो, यहाँ के पोकर प्लेयर्स ज्यादा होंगे, जबलपुर में अभी ज्यादा पोकर प्लेयर्स नहीं होंगे। सो डू यू फेस दैट, यू फील कि वो कम्युनिटी का एंगल मिसिंग हो जाता है, बिकॉज इट्स अ लोनली गेम ऑल्सो? 100% आई फुली अग्री विद योर बात हियर। फॉर एग्जांपल, आप बॉम्बे में रहते हो, राइट। करेक्ट। सो आई हैव अ चांस टू, मतलब मीट यू फॉर once in 15 days एंड टॉक अबाउट पोकर, एंड थोड़ा मतलब सेम, पोकर इज अ फील्ड जहाँ पे कलीग्स नहीं है, रियल लाइफ कलीग्स नहीं है, करेक्ट, वो फील एग्जैक्टली। करते, राइट। सो या डेफिनेटली वो एंगल मिसिंग रहता है जबलपुर में वंस, क्योंकि बॉम्बे में आई वाज लिविंग विद पोकर प्लेयर्स, सो बहुत इजी रहती थी चीजें। But there are advantages also. For example, I so my family shifted to a new home. That was one of the reasons I moved here, क्योंकि I wanted to live with them. So, श्योर। but relatively, जैसे Bombay is very, Bombay is a very fast-paced city. So करेक्ट। city life इतना नहीं हो पाता, especially for people like us जो शाम को ही busy हैं. तो जबलपुर में वो एंगल ज्यादा बेटर है कि there is time, there are हाँ, people I know, and I'm living with my family, तो क्योंकि पोकर में हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो फैमिली साथ रह के वो फायदा हो जाता है। आई कैन मैनेज अ प्रॉपर डाइट, बेटर डाइट, एंड देयर आर थिंग्स दैट माय पेरेंट्स हेल्प मी डू। तो वो चीजों से मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेटर हो रहा है, तो कॉम्पेंसेट हो रहा है, एज इन की वो हो रहा है कि पोकर फ्रेंड्स नहीं है, थोड़ा वो वाला एंगल जा रहा है, लेकिन मेरा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बेटर हो रहा है घर में रह के। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट कि आपने ये इसको ऐसे रिलेट किया कि इट्स अफेक्टिंग फिजिकली एंड मेंटली, कि आपके पास सपोर्ट घर पे है, प्लस आपके पास दिन में यू हैव पीपल टू लुक फॉरवर्ड टू। लाइक मुंबई में वो नहीं होएगा, दिन में लोग नहीं होंगे और आपको रात को यू व्हेन पीपल आर अवेलेबल यू आर नॉट अवेलेबल। सो परफेक्ट, ऑसम। सारांश, यू गिव मी द फीलिंग कि आप समवन लाइक यू, लाइक अगेन पोकर इज अ नॉन अकाउंटेबल गेम, राइट? यूजुअली आप किसी से भी अकाउंटेबल नहीं हो, खुद को ही अकाउंटेबल हो।
कि यार मतलब अच्छा करना है तो कर, खराब करिए मत, किसी को कोई बॉस नहीं है आपके पास पोकर में, इट्स अ लोनली गेम। सो डू यू, बट यू सीम लाइक कि आप खुद के ऊपर हार्ड होते होंगे, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यू वुड नॉट बी द वन कि भाई आज चलता है, अरे हार गए खेल गए, ऐसा लग रहा है कि आप खुद को मतलब भड़कते होंगे खुद के ऊपर ही कि यार नॉट अलाउड टू डू इट। सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अकाउंटेबल, like yeah, how do you keep yourself accountable? Yeah, very true. I think a lot of players might be doing it, but yeah, I keep a very एक specific standard for myself. क्योंकि इस गेम में और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अनलाइक जॉब आपका परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं होना है, Correct, अप्रिसिएशन नहीं correct. होना है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो यू हैव टू कीप योर स्टैंडर्ड्स टू योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल, I treat poker as a job, full time job only. So Yeah. unlike Sunday, Saturday is my off day. Saturday I don't play. Saturday I feel Saturday कुछ भी हो, Saturday I नहीं खेलूंगा. जैसे Sunday को आप जो ऑफिस नहीं जा सकते, right? Saturday is that for me. उसके अलावा जैसे जॉब में you get 12 to 18 privileged leaves, right? So poker में I have kept it for myself कि month में 1.5 to 2 days leave मुझे allowed है. तो जब मुझे लेना हो मेरे ऊपर है, right? And it Okay. can be any day. क्योंकि it's very easy to get carried away in poker. No, it can be very monotonous. You need consistent leaves. Now comes the accountability part. So same thing happens to me also कि वो standard accountability के multiple factors है. जैसे multiple level पे poker में accountability हो सकती है. एक हो गया bankroll management. तो उसमें accountability इसलिए आती है क्योंकि मैं मेरा पोकर करियर एक मेरी कंपनी की तरह है. मैं वो कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं उसका सीईओ हूँ, राइट? मैं उसका Correct. सीएफओ भी हूँ. तो बैंकफुल मैनेजमेंट सीएफओ का काम हो गया. एंड अगर मैं ढंग से फाइनेंसेस मेंटेन नहीं करूंगा तो मैं कितना भी विक्ट्री करते रहूं लेकिन मेरा आरओआई काफी खराब ही रहेगा. तो Got it. एक वन साइड इज टू पुट वॉल्यूम एंड ब्रिंग इन मोर कैश. सेकंड पॉइंट इज कि हाउ प्रॉफिटेबल यू आर. दैट प्रॉफिटेबिलिटी का भी दो फंक्शन है, आप कितने अच्छे प्लेयर हो और कितने अच्छे आप फंड मैनेजर हो, राइट? वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो उसके लिए व्हाट आई डू इज, as I told you before कि Yeah. या सो फॉर एग्जांपल हर बंदे के लिए अलग अलग होगा ये. फॉर अ पर्सन लाइक मी अगर 10,000 से ज्यादा का टूर्नामेंट है तो आई Right. डोंट रीबाय इफ आई एम गेटिंग लेस देन 20 बिग ब्लाइंड्स. उसके रीजनिंग पे भी मैं जाऊंगा इफ यू वांट मी टू. No, I want to cover it in the end for sure. मतलब मैंने already वो questions, I have that question written 100%. I want to in fact cover it. So this is the way. So आप एक सब like I just अगर broadly functions को classify करें accountability के, तो finance पे आप बोल रहे हो, you know what your metrics are कि I will not exceed this. So that's how you keep yourself accountable. और क्या ways है आप like अगर okay, imagine there are no results coming. Are you like doing something about it? Like are you talking to yourself saying कि boss क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? Like how do you, yeah. आई थिंक अकाउंटेबिलिटी के ना तीन फैक्टर्स आपने सही बोला. अकाउंटेबिलिटी को अगर हम डिवाइड करें, मतलब मेरे पास ऐसा Correct. था नहीं लेकिन वी कैन डेफिनेटली मेक इट. अकाउंटेबिलिटी का एक हो गया फाइनेंस वाला पार्ट. हाँ एक हो हाँ गया, एक तो क्या बोलते हैं अपन डे टू डे वर्किंग, जो अपन बोलते हैं ना बीयूआई, बिजनेस एज यूजुअल, बीएयू हाँ है. हाँ वो आप कहोगे कि आप डेली पोकर कैसा खेल रहे हो, राइट? हाँ हाँ. इसका हो गया लॉन्ग टर्म, लॉन्ग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड. तो डेली बेसिस के लिए क्या करना है, हाउ एम आई प्लेइंग डेली, वो मैं अगले दिन रिव्यू करता हूँ हैंड हिस्ट्री Okay. देखकर कि हाँ. Perfect. हाउ डू आई प्ले. मतलब क्योंकि आप क्योंकि गेम इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, यू कैन डेफिनेटली बी कि आप रात में आप यू फील कि आज मैं अच्छा नहीं खेला, बट ये अच्छा खेला, तो बट नेक्स्ट डे यू हैव टू स्टडी दोस स्पॉट्स. एंड अगर आप स्पॉट स्टडी नहीं करोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप कैसा खेल रहे हो. दोनों चीज होती है. आप अपने एक्सपेक्टेशन से बेटर भी खेल रहे होगे, आप रिव्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्पॉट मैं ऐसे भी ट्राई कर सकता हूँ. तो वो आपको बीएई होना चाहिए. वो आपको डेली रिव्यू करना पड़ेगा, डेली आपको टूर्नामेंट देखने पड़ेंगे टू सी कि हाउ यू आर गोइंग. देन आता है लॉन्ग टर्म वाला पार्ट. जैसे वो उसके लिए आप स्टडी करते हो कि आप कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हो टू इम्प्रूव योर लॉन्ग टर्म गेम. कि वो आज जैसे आज मैं कोई स्पॉट स्टडी कर रहा हूँ 2 घंटे, कोई मतलब कोई पर्टिकुलर बोर्ड स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे आज शायद हेल्प नहीं करेगा क्योंकि आज शायद बोर्ड आए ही नहीं दिन भर में. लॉन्ग टर्म में लेकिन वो मैं अपने सारे बोर्ड स्टडी कर रहा हूँ, वो मेरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो गया, राइट? Sure. तो एक शॉर्ट टर्म स्टडी, एक लॉन्ग टर्म स्टडी हो गया, एंड एक फाइनेंस वाला पार्ट हो गया. आई थिंक इसमें आई थिंक एक और पार्ट है जो मैं सोच रहा था लेकिन मैं अभी भूल गया हूँ. अच्छा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, सो आई गेट इट, सो आई बट आई फील कि honestly when I do podcasts and people tell me they do this study, some people like Zarwan who are very chill and very open, Zarwan would honestly tell me कि पार्थ मैं यार कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ and अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया कि that's the way I'm going ahead with it. So when I talk to you I want to understand कि आप ये like in case in like it's as a social, अपन आप फैमिली के साथ रहते हो, बहुत सोशल लाइफ भी होती है. सो इज इट लाइक कि आपको बोलेंगे कि नहीं चलो कल लंच पे जाना है, यहाँ कहीं जाना है, या फिर चलो कहीं किसी के यहाँ ये फंक्शन है ना, आपका वो लीव डे परमिट नहीं है, तो आर यू लाइक अकाउंटेबल देयर कि लाइक कि चल छोड़ ना अभी, मतलब हाँ आज पढ़ाई नहीं करते, आज दिन में चलो यहाँ चले गए, तो चलो आज पढ़ाई नहीं होगी तो कल का रिव्यू नहीं हुआ और रात को यहाँ जाना है, हाउ डज दैट गो? ठीक है, तो ऑनेस्टली हम तो बहुत अपने सही चीज बोली, ये चीज की स्टैंडर्ड्स वाली बात. तो देयर इज वन थिंग
ये स्टैंडर्ड मैं मेंटेन करना चाहता हूँ एंड ये स्टैंडर्ड मैं मेंटेन करता हूँ, हाँ, ठीक है। आई नो कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहा हूँ तो उसका मैं 50% 40% ही मेंटेन कर पाता हूँ। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया अकाउंटेबिलिटी का, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से मैं करना चाहता हूँ उस कंसिस्टेंसी से आई एम नॉट एबल टू डू इट। ये श्योर, एक प्रॉब्लम पोकर प्लेयर्स को होता है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई थिंक बिगेस्ट रीजंस कि इतने अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी स्टेबल का पार्ट रहते हैं, क्योंकि टच श्योर, पॉइंट मेंटेन रहता है, वहां पे कंटिन्यूअस सेशंस रहते हैं, तो यू कीप ऑन स्टडिंग। तो मेरे साथ क्या होता है यूजुअली कि जब मेरा अच्छा रन जा रहा होता है बहुत, तब मैं स्टडी थोड़ा कम कर देता हूँ। तब मैं ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 2 गुड डेज इन अ रो, तो आई वुड रिलैक्स मोर, आई वुड चिल मोर, आई वुड थोड़ा सी उन नॉट द स्टडी वीडियोस, आई वुड मे बी सी हैंड हिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा एंड कैश इनटू इट। एंड कन्वर्सली जब मेरा खराब रन जाता है तब मैं पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता हूँ। क्यों देता है? क्योंकि जब आपका खराब रन होता है तो आप बहुत जल्दी टिल्ट हो सकते हो, आप गेम में गॉट इट, आपको कंट्रोल फील नहीं होता, राइट। लेकिन अगर आप उस ड्यूरेशन में मैं कुछ वीडियोस देखना चालू कर देता हूँ, तो एक एक न्यू सेंस ऑफ एक्साइटमेंट रहता है जब उस दिन पोकर खेल रहा होता हूँ मैं, कि आज ये ट्राई करना है, आज ये ट्राई करके देखना है। तो जब भी मेरा खराब रन होता है, फील जब भी मेरे को ऐसा खराब रन, आई मीन कि फॉर एग्जांपल इस हफ्ते मैंने 2 टाइटल भी शिप किए हो, लेकिन फिर 4 दिन भी अगर मेरा काफी नेगेटिव हो गया, तो वो मुझे फील होता है कि टुडे मुझे सिर्फ 2-3 वीडियो ही देखने हैं 1 घंटे के, तो उससे आई फील की थोड़ा एक पर्पस फील होता है। एंड बहुत बार पोकर में ना मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि हर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध दिन ऐसा फील होने लगता है कि आज मैं एकदम मोनोटोनस गेम खेल रहा हूँ, मतलब एक बॉट की तरह खेल रहा हूँ, कि सारांश गर्ग बैठा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, एक बॉट खेल रहा है। तब गॉट इट, मुझे तब काफी घटिया फील होता है कि what am I bringing to the table, right? इस केस में literally what am I bringing to the table? So उस केस में I go back to my old hand histories and see कि क्या differently कर रहा था मैं तब और अभी क्या different कर रहा हूँ। I गॉट take इट। my 5 best tournaments and see कि उसमें क्या difference था, अभी क्या miss कर दिया मैंने, कोई bluff spots या over value spot या कहीं value miss कर रहा हूँ वाले spots। So you keep all the data handy? ऐसा आप रखते हो? Like you have your top 5 tournament histories, hand histories available with you? Yeah, so hand histories तो readily available रहता है हर साइट का, Correct. and टॉप 4-5 एटलीस्ट का तो डेट याद है ऑनेस्टली, तो फिर वो वहां जाके देख Okay. बाकी दिस आल्सो हेल्प्स मी, सो आई आल्सो सी ना कि पोकर का फन कंटेंट आल्सो हेल्प्स मी अ लॉट। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस सीरीज इनसाइड द माइंड ऑफ अ प्रो YouTube Okay. में, आई Okay. तो इट्स अ मस्ट रिकमेंड मेरे हिसाब से, Oh, क्योंकि sure. इट्स वेरी फन टू वॉच, क्योंकि एक WSOP सीरीज कवर किया है उसमें, पूरा एक लाइव सीरीज कवर किया है, लेकिन जब हम सीरीज देख रहे हैं तो वो जो बंदा खेल रहा है, जो वियरा और मटेओस खेल रहे हैं, वो खुद कमेंट्री दे रहे हैं कि हर हैंड में उन्होंने क्या सोचा है। तो आपको एक मूवी जैसा फील भी आ रहा है, लेकिन आप साथ साथ सीख भी रहे हो, तो लाइव पोकर के लिए तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है आई फील। देन एक अभिषेक गोयंडी का वीडियो है, जो उसने एक सुपर हाई रोलर स्ट्रीम किया था 2-3 साल पहले, तो मुझे पर्टिकुलरली वो सिंगल मोस्ट वीडियो इतना ज्यादा पसंद है, वो मैं जब भी मेरा पोकर से मैं 2-3 महीने में स्प्यू होता हूँ, मैं वो वीडियो पर्टिकुलरली वापस देख लेता हूँ। It's a 6 hour stream. I've seen it. Yeah. आई हैव सीन इट 6 times दैट स्ट्रीम, आई डोंट नो Oh, व्हाई। wow. So Abhishek, I think I told him once when I met him, I don't know he'll remember it or not. I have also committed on it कि बाद में, क्योंकि वो खत्म जब 4-5 लोग बचते हैं तब वो स्ट्रीम बंद हो गया, तो I have written in it कि क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। I think he finished third. So some streams, it not, I'm not saying that's the best out there available, but कुछ चीजें आपको ज्यादा आप रिलेट कर पाते हो उससे, मेरे प्रोसेस में मुझे बहुत हेल्प होता है, जिसको कामनेस से खेलता है, जिस थॉट प्रोसेस से खेलता है, एंड हर हैंड हर फ्लॉप में वो बोल रहा है ना जो चीज, मतलब सोचते सब है लेकिन वो बोल रहा है कि टर्न ड्रिवर में ये मेरा एम है ये करने का, तो वो प्रोसेस से बहुत मतलब आई थिंक स्ट्रीमलाइन होता है आपका गेम। Wow. Okay. Perfect. आपने काफी ज्यादा लोगों को बोल दिया data also to where they can study from. So that's nice. You're a man of numbers. And I from what I know of maybe poker में while you were on your job and whatever you made out of poker, again if I'm just talking this thing, your results, okay, we just talk results, whatever your results were previous to this year and last 12 months में what you must have done must be maybe 3x 4x 5x 10x, I don't know what the amount is. So what has been the result, what has been the reason for that, क्यों ऐसा हुआ है, क्या एक साल में क्या इतना चेंज हो गया? So I think main thing that changed obviously was that I was doing this full time. So first month wasn't good, क्योंकि first month I took a lot of pressure कि this is my full time work now, I have to do good. So हाँ, I had an insane amount of pressure then. So luckily IPC का leaderboard हुआ था, तो leaderboard में I did 6-7th. So leaderboard तो थोड़ा pressure ease off लगी, चलो थोड़ा income I'm there चालू हो somewhere, हाँ, गया। Then फिर February से what changed was when I started studying अच्छे से पूरा, तो I realized कि जब मैं
खेल रहा था और अभी में क्या डिफरेंस लाना है मुझे. एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा जब व्हेन आई डू इट टिल दिसंबर आई फेल्ट कि आई एम जस्ट डूइंग दिस एज अ रिक्रिएशनली, राइट. सो फरवरी में थोड़ा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में बहुत हेल्प हुआ कि दिस इज व्हाट आई डू नाउ. सो आई शुड नॉट, सो आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई एम नॉट सेकंड, मतलब आई एम अमंग द बेस्ट. I may not be, I was not also, but I started feeling and believing it in order to to be there, right? Then uh, uh, I think financially what changed was when this Spartan started this high roller series. So I think I used to only play tournaments till 10,000 by 10 or 11,000 maximum. I never used to go beyond it. But ये April first week से Spartan ने high roller series चालू हुई, जो अभी भी चल रहा है, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday जो होता है. तो उसमें फर्स्ट टूर्नामेंट का मैंने डिपॉजिट कोड लेके टिकट ले लिया एंड आई शिप्ड इट फर्स्ट वेडनेसडे वाला. So that was my biggest victory then. I think got 6-7 lakhs. Okay. And Wednesday चालू हुआ, पहला वाला ही था, तो पहला वाला शिफ्ट. सेकंड डे अगेन थर्सडे को था, वो मैंने फिर डिपॉजिट कोड यूज करा क्योंकि टिकट वाज 20,000 22,000. उसमें मैं केम सेकंड. सो मेरे बैंक रोल के लिए इंसेन हो गया. Wow. इन दैट सेम वीक मैं मनी मेकर में भी सेकंड आ गया था. तो मेरा जो पूरा पोकर का लाइफ का बैंक रोल था वो एक हफ्ते में डबल हो गया था. Got it. तो फिर आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस बिग टूर्नामेंट्स. आई स्टार्ट स्टडीइंग दिस मोर. आई रियलाइज कि 6 मैक्स टूर्नामेंट्स इंडिया में अभी इतने नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे थे. एंड उसमें स्कोप है बेटर करने का. सो आई स्टडीड 6 मैक्स थोड़ा ज्यादा. एंड आई फील मेरे रिजल्ट्स भी 6 मैक्स और 6 मैक्स से मच बेटर कंपेयर्ड टू 8 मैक्स. Okay. Got it. Nice. So that is one this thing that kind of changed your entire thing in February. So yeah, April. Okay, April. You feel you at least believe that you have to believe that I'm doing what I'm doing and I'm good at it. What advantage does a Saransh Garg have over other poker players is what you feel. मेरे पास ये चीज है जो आज ना भी हो, maybe I'm not the best, but I'll be there and like I think I'm on the path to being the best. So what is that advantage? Yeah, good question. I think everyone should have that thing. कोई भी poker player who is out there, he should feel कि this is my core competency. Might not give, I'll not be able to convert it into positive EV right now, but long run it might be. Nice. Right. So I feel numbers is my I think greatest advantage. I'm very good with numbers, I feel. And so many poker players are good with numbers, but so when I have talked with many people, I've realized there are certain things in poker in numbers that which does not require any science. For example, कोई theory कुछ numbers नहीं. For example, अगर आप बटन से 13 बिग ब्लाइंड्स A7 ऑफसूट शव कर रहे हो, शव मार रहे हो, राइट. तो नंबर्स यूज करके आप काउंट कर सकते हो कितने परसेंट हैंड्स आपसे बेटर है. जब आप 13 बिग ब्लाइंड्स A7 ऑफ शव मार रहे हो, यू आर नॉट अफ्रेड अगर पॉकेट 6 से कॉल आ गया, राइट. क्योंकि फ्लिप लेने आप रेडी हो, आप 13 बिग ब्लाइंड्स में हो. करेक्ट. आपसे बेटर हैंड्स कौन से हैं? एस 8 ऑफसूट एंड अबव. करेक्ट. तो फॉर एग्जांपल कितने एस 8 ऑफसूट है? 12. हां, 3 एस बचे हैं, 4 8 बचे हैं. हां 3 into 4 is 12. तो 12 एस 8 ऑफसूट. आपके पास एस 7 ऑफसूट है, राइट. तो 12 एस 8 ऑफसूट है. ऐसे 12 एस 9 एस 10 एस जैक एस क्वीन एस किंग होंगे. किंग क्वीन जैक 10 9 8 6 into 12 72 हैंड्स हो गए, राइट. तो 72 हैंड्स हो गए. और किन हैंड्स आपको डर है? पॉकेट एसेस से लेके पॉकेट 7 से डर है. करेक्ट. पॉकेट किंग्स कितने होते हैं? 6. करेक्ट. किंग्स क्वींस जैक्स 10s 9s 8s. पॉकेट किंग्स क्यों 6 क्यों? राइट, सॉरी. राइट परफेक्ट. किंग्स क्वींस जैक्स 10s 9s 8s. तो 6 6 36. करेक्ट. 36. और पॉकेट एसेस कितने बचे हैं? 3. करेक्ट. क्योंकि एक हमारे पास है. करेक्ट. सिमिलरली 3 बचे हैं क्योंकि एक 7 हमारे पास है. करेक्ट. ये हैंड्स हो गए 42. ठीक है. पहले थे 72 42 114. इन हैंड्स आपको डर है, ठीक है. टोटल हैंड्स कितने बचे हैं? 13. करेक्ट. तो आपके पास 1200 कुछ बचे हैं. तो 114 इज रफली 9 to 10%. ठीक है. एंड क्योंकि आप बटन में हो, आपके सामने 2 लोग एक्ट करने को बचे हैं. तो अगर आप बटन में हो, स्मॉल ब्लाइंड प्लस बिग ब्लाइंड में देखोगे तो यू कैन ऐड द प्रोबेबिलिटी 10% प्लस, क्योंकि इधर और वाला फंक्शन लगेगा यहाँ पे. तो आप बटन से A7 ऑफ शव मार रहे हो, तो there's a 20% चांस कि स्मॉल ब्लाइंड एंड बिग ब्लाइंड कैन वेक अप विद अ बेटर हैंड. 19 to 20% चांस. तो ये मैथ है, ये कोई थ्योरी नहीं बता रहा है. यू कैन कैलकुलेट, एक्चुअली कैलकुलेट. गॉट इट. वाओ. तो ये चीज गाइस सब लोग रिवाइंड करना वापस से.
वापस से पूरा देखना, फिर से रिवाइंड करना, फिर वापस से देखना, ऐसे 5 बार करना, मैं भी करूंगा, उसके बाद एग्जैक्टली आपको बैठेगा। बट नहीं, फेयर इनफ है, आई थिंक 100% मेक सेंस व्हाट यू सेड, 100%। या जैसे फॉर एग्जांपल लोग पॉकेट पेयर्स देके काफी वो हो जाते हैं, तो देयर इज, अगर 800 टेबल है तो 1 in every 2 हैंड में एक पॉकेट पेयर आएगा लोगों के, एक बंदे के पास 16 में से एक बार आएगा। तो वो करेक्ट। यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस आई फील। सो मतलब व्हाट आई मीन इज कि इसको मैं एकदम अच्छे से मोनेटाइज नहीं कर पाया हूं अभी, क्योंकि दिस डज नॉट अकाउंट की ईवी वाला पार्ट, जब आप हार रहे हो जीत रहे हो कितने ब्लाइंड से। बट व्हेन आई फील जब आप इतने शॉर्ट स्टैक शव कर रहे हो, व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर डबल अप और बर्स्ट, एंड तो यू कैन यूज दिस लॉजिक, right? कि कितने परसेंट hands better है, are you it's just a 20% chance, you should take that 20% chance. You can do it with every other hand. So this will tell you why king queen is better than a7 of shoving for shoving here, क्योंकि king queen से better hands बहुत कम हो जाएंगे। गॉट इट। ओके, वाओ। सो ये आपने कैसे, हाउ डिड यू एक्चुअली गेट दिस गोइंग फॉर योरसेल्फ? मतलब आपने इतना ये, व्हाट इज दिस, जस्ट समथिंग व्हिच केम नेचुरली, और डिड यू डू अ लॉट ऑफ स्टडी ऑन दिस एस्पेक्ट, डिड यू I अप्लाई द मैथ? so initially when I didn't know any solvers, I didn't used to know any solvers or tools, क्योंकि I didn't know a lot of people in poker. First of all, that was the problem, क्योंकि I was not a part of any group, and so I was doing it alone, right? So I used to spend a lot of time in Equilab. तो ओके, Equilab में ना ये combination के numbers वगैरह बहुत easily हो जाते हैं store. Equilab is a superb tool who is starting poker. I feel Equilab, everyone should use Equilab, क्योंकि आपको जनरल बेसिक्स में आपको रेंज वर्सेस रेंज की इक्विटी कैलकुलेट करने में, स्पॉट्स कैलकुलेट करने में, या टर्न एनालाइजर कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करता है इक्वल। गॉट तो इट, वहां पे ही आई यूज दिस, मतलब गॉट नोवेयर इट, एल्स। दैट काइंड ऑफ हेल्प्ड यू। Awesome. So that is the edge that you have, and who are the poker players who inspire you? Like किससे आप और कुछ कुछ सीखते हो, कहीं से ऐसा कुछ है जिससे आप जो सीखते हो, मे बी इंडियन, मे बी इंटरनेशनल as well, whoever? Lot of poker players, first of all. I think Indian players only. I I basically I mostly I believe in peer to peer learning a lot. I feel कि एक मतलब एक ग्लोबल लेवल के आपके रोल मॉडल्स होना चाहिए। For example, for me, global role models will be Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, and probably Virat Kohli. All three of them have one thing in common, कि they are willing to bend the world through their efforts. मतलब कि Sure. इतना effort, they are like कि they are the sheer example of कि talent is nothing, मतलब कि hard work can मतलब crush everything, मतलब persistence Sure. and hard work can crush everything. So लेकिन but if you ask me about Indian players, I think Laksh has helped me a lot initially. Laksh Pal Singh, you might obviously know, he was a mutual friend of friend, so he helped me and guided me a lot initially. Okay. Then some players I look up to, as in कि I feel कि हाँ इनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। um, आशीष मनोत, of course, आशीष मनोत, then Aditya Sushant, Karthik Ved, Siddharth Kriplani live I feel is a beast. Well, I get so She I stares was, into you. yeah, I was just playing a tournament now in Goa, and he was there sitting beside me, and I actually, so it was a second live tournament, and I got intimidated because of him. So he has that presence. But yeah, he was very helpful, still a very nice guy. And of course, Laksh, Anuj, Anuj is also a very good player, which I up to. Yeah, so these are the players who are doing insane, and I had the chance to interact with, I think, all of them. One thing I loved about this poker community is everyone is very humble and very open to Help. uh, help. Yeah. नहीं, absolutely, absolutely. That is one thing. Correct. Uh, आप लाइव भी खेलते हो, and like I said, I think IPC Nepal was your first time live. Yeah. Yeah, it was your first time live, and you did well there. I think आपने एक tournament में you did really well, and I remember pocket force was your hand, right? जो आपने कुछ shove किया था from the button या कुछ. I kind of remember we had discussed this. Yeah, finished 20th. I got busted through that hand. Something like that, right? Perfect. Okay. Live versus online, what are you kind of developing a थोड़ा liking for, ऐसा कुछ हुआ है, and क्या different है, और like in each? So I feel I'm inclined more towards online, because yeah, but live is definitely more fun. You get to meet people, and you don't meet people in poker generally, no. So it's so I so there's this player Avnish Munjal. Okay, yeah. He is a senior of mine from my undergrad college in IT Warangal. So he told me a very nice thing कि I really liked it कि online मैं online खेलता हूँ, क्योंकि online मेरा वो है bread and butter है,
ठीक है, ऑनलाइन मेरी जॉब है, मैं ऑनलाइन खेलता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन से मेरा घर चलेगा, ऑनलाइन मेरा कमाई करेगा, ऑनलाइन मेरा करियर है। लेकिन जब आप जॉब भी करते हो, you go to business meetings, you go to बाहर convention, you go to product launches अपनी जॉब में, right? जैसे I was working in Godrej, I used to go to श्रीलंका annual meetings में, तो लाइव उनके लिए वो है कि वो वहां जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, थोड़ा फन भी हो रहा है, एंड वहां पे जीत गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी जीता तो इट्स फाइन, मतलब लाइफ की लर्निंग है। तो I operate through that way. I don't look upon myself as a player who want to मतलब full time life player पे convert होने का I don't look uh, I don't know, मतलब that is not that very appealing to me, क्योंकि I feel कि एक टूर्नामेंट होता है लाइफ में एक बार में, तो थोड़ा कम वो है, वेरिएंस बहुत हाई है, कम ROI है, प्लस आई फील कि आई एम ऑलरेडी लेट थोड़ा लाइफ के लिए। पीपल जो 28-29 ऑलरेडी हैं, वो बहुत ज्यादा लाइफ खेल चुके हैं, तुमको एक एक्सपीरियंस है, but yeah, I'm learning. I definitely liked life. I think my first tournament was break even only. This Nepal one, this Goa one was definitely better. I finished third in one of those, and yeah, so I'm liking it definitely. And I plan to do an international one in next 6 months. Okay. Oh wow! I was just going to ask you that. Acha, so that is on the cards. Yeah, But like definitely. you said, कि every 3-4 months you don't mind taking a offside from work. हाँ, perfect. Nice. That is also work, but yeah, in a good way. Yeah. हाँ, Just okay. like offsite in a real corporate world. Yeah. Sure. How do you deal? आप ऐसे नहीं हो कि ज्यादा like आप tilt कैसे handle करते हो, या फिर आप अगर tilt ना हो तो first तो tilt के पहले variance कैसे handle करते हो? Does it like piss you off and does it put you on a tilt, or how do you go through it in your day-to-day career? अभी तो I think I am much better, क्योंकि तब अब I think that is to everyone that is I think listening this कि that definitely comes with experience. कि initially क्या till 6 months back I used to feel कि I'm not handling my tilt very well. For example, एक टूर्नामेंट खराब हो रहा है तो बाकी सारे टूर्नामेंट में स्पिलेज हो रहा है वो, तो उसको ठीक करने का तरीका कोई मतलब आई थिंक आई डोंट हैव अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट यही है कि जो 10 कीवर्ड्स आपने कल बोले अपने वीडियो में कि ट्रस्ट द प्रोसेस, वॉल्यूम, आल्सो मेरा बेस्ट तरीका है टिल्ट हैंडल करने का कि आई गो बैक टू द डिसीजन व्हिच रिजल्टेड इन अ टिल्ट फॉर मी। आई द ओनली थिंग दैट आई सी इज कि अगर मैं 100 बार ये सिचुएशन आता है तो 100 बार में से मैं 100 बार सेम डिसीजन ले रहा हूँ, तो फिर टिल्ट का कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? तो एक दिस इज बुक कॉल्ड मेंटल गेम ऑफ पोकर, उसमें फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि यू नो पोकर में वेरिएंस है, यू नो, राइट? तो आप बोलोगे हाँ, तो फिर रोज सरप्राइज क्यों होते हो? इनसे आई थॉट कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो छोटी सी लाइन है कि वी नो कि पोकर में वेरिएंस है, वी नो दैट गेम, वी लव दिस गेम, वी स्टिल लव दिस गेम, वी नो दिस इज अ वेरिएंस गेम एंड वी स्टिल लव इट, सो वी शुड बी सरप्राइज्ड ऑन अ डेली बेसिस कि वेरिएंस आ गया। रनर कैसे लग गया? हाँ, Yeah. right, right, right. Nice. So अभी आप नहीं होते हैं, you're saying it's not causing a spillage mostly, like you kind of avoid it. Fair enough. I want to know, you play at, जैसा आपने कहा था कि आप maximum 10,000 11,000 रुपए buyins खेलते हो, which is most of the main events, सब series के main events यही price के होते हाँ, हैं। अभी तो सारे टूर्नामेंट खेल रहा हूँ मैं। हाँ, और पहले आप ये खेलते थे, now you play all these massive tournaments also, which the buy-ins probably high rollers are 33,000 rupees max, I believe, and कोई तो ऊपर भी जाते हैं। तो if I ask you, and समझो it's a normal average every Sunday of Indian poker, what is like an good and a bad Sunday? And just if I ask you, for people watching, like जो regs होते हैं जहाँ आप हो, तो एक मतलब, because what we see is एक score देख रहे हो कि he walked out with 4 lakh rupees cash and he shipped this. What happens on a good or bad Sunday? Like what are the amount of buyings that actually happen? Like how much do you have a math there कि मुझे पता है मैं इतनी fire करूंगा? And कैसा होता है एक Sunday, कैसा never miss a Sunday actually कैसे बनता है? Yeah. Okay, so I think that I might not be the best person for this in terms of the exact amount, but I'll tell नहीं, you my whatever process. for you. Yeah, yeah, yeah. Because I'll tell you कि जो mostly regs हैं इंडिया में अभी, they are playing I think 9-10 tournaments at a time, right? Correct. So अभी मेरा अभी जो bandwidth है वो 6 tournaments, 7 tournaments तक गया है, ठीक है? I don't play more than 6 tournaments at a time अभी, 7 I can play. I feel the reason is कि मेरा percentage of जो मेरा एज है वो ज्यादा खराब हो जाएगा अगर मैं 8 टूर्नामेंट्स लगा लूं, तो आई फील अभी, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू, आई कैन प्ले 10 टूर्नामेंट्स अगर मतलब इफ आई हैव क्वालिफाइड, बट आई एम नॉट डूइंग अभी 7 से ज्यादा, क्योंकि आई फील कि प्रोस के अगेंस्ट एज ही यही है अभी कि आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम एट द टेबल, सो आई नो कि लोग कैसे खेल रहे हैं, बाकी लोग कैसे खेल रहे हैं, जो मुझसे कम अच्छे प्लेयर हैं उनको मैं ज्यादा एक्सप्लॉइट कैसे कर सकता हूँ ज्यादा टाइम उनको देखकर, राइट? Correct. तो मैं कम टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, सो फॉर मी जनरल डेज
70 to 80,000 rupees मेरा I think investment जाता है. A Sunday. नहीं, on a general day. On a Okay. Sunday it's around 1.4 1.3 lakhs. Okay. Okay. सेम सिंपल रूल ऑफ थंब है मेरा संडेज को तो स्पेशली कि रीबाय टूर्नामेंट में आई डोंट हैव टू रीबाय क्योंकि 6 बजे का टूर्नामेंट में मैं ब्रेक कर गया हूं तो 7 बजे का टूर्नामेंट चालू हो गया है तो कोई पॉइंट ही नहीं है रीबाय करने का क्योंकि मैं 6 से 7 से ज्यादा टूर्नामेंट खेल ही नहीं रहा हूं एनीवे राइट ओके. हाँ एंड कोई इफ इट्स 9-10 पीएम एंड मेरी टेबल्स 6-7 से ज्यादा वैसे नहीं भर रही हैं तो अगर 11,000 से ज्यादा का टूर्नामेंट है तो आई डोंट रीबाय अगर 20 बिग ब्लाइंड से कम है मेरे पास तो उसका सिंपल लॉजिक है 10,000 की अगर 10,000 प्लस टूर्नामेंट में अगर मैं खेल रहा हूँ और हाई रोलर्स में खेल रहा हूँ तो मेरा एज सपोजिटली हाइपोथेटिकली लेट्स टेक अ फिगर कि 25% एज है मेरा ठीक है Correct. तो मैं 10% रिक दे रहा हूँ साइड को टूर्नामेंट का अब 25% एज है आपका ओवर व्हाट वुड यू से 25% एज है? ओवर फील्ड हाँ. ओके. फॉर एग्जांपल इफ देयर आर एक हाई रोलर टूर्नामेंट है जिसमें 200 है. 16,000 हाँ. 16,500 का टूर्नामेंट है 20 lakhs होता है हाँ. टोटल पीपल नीडेड आर 133 ठीक करेक्ट. है 133 में अराउंड 80 और 90 पीपल प्ले बाकी री बाय होता री है एंट्री होती है. करेक्ट. वो मेरा भी री एंट्री हो सकता है तो वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ 85 पीपल प्ले तो हाँ. आई पर्सनली फील कि माय आई वुड मतलब देयर विल डेफिनेटली बी 20 पीपल हु आर बेटर देन मी करेक्ट. then there will be definitely 20 to 30 people who are definitely not better than me श्योर. and there will be 30-40 people who are same as me वो श्योर. वेरिएंस काउंट उस दिन पे डिपेंड करता है राइट तो ओवरऑल एज मेरा 20 to 30% है ओवरऑल क्योंकि 20 लोग बेटर है 30 लोग कम अच्छे हैं तो ओवरऑल फील्ड में मैं 10-15 लोगों से डेफिनेटली बेटर हूँ तो वो समझ एज गया. मेरा 20-25% है रिटर्न जो श्योर. 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 एंड 10% रेक जा रहा है मेरा साइड पे हाँ. हाँ. तो मेरा 15% एज मतलब आरओआई की टर्म से 15% आरओआई है मेरे पास राइट ओके. तो एंड हम जितना स्टडी करते हैं टूर्नामेंट पोकर वो मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है 30 से 70 बिग ब्लाइंड्स के बीच ठीक है 50-60 बिग ब्लाइंड्स इज आइडियल क्योंकि आप 2 घंटे लेट भी रजिस्टर करो हाई रोलर को तो आपका स्टार्टिंग स्टैक में 25,000 है तो 2 घंटे बाद भी 35,000 33,000 ही पहुंचता है एवरेज स्टैक तो इफ यू एंटर तब रीबाय अगर आप तब कर रहे हो तो यू हैव अराउंड 70% ऑफ एवरेज स्टैक गॉट लेकिन इट. जब अंडर 20 बिग ब्लाइंड्स आप कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल आप 19 बिग ब्लाइंड्स में एंटर कर रहे हो 9 बजे का हाई रोलर है आप 19 बिग ब्लाइंड्स में कर रहे हो तो 12:30 हो गया है ऑलरेडी 12:30 आप एंटर कर रहे हो तब एवरेज बिग ब्लाइंड जो एवरेज स्टैक चल रहा है वो 40 टू 43 बिग ब्लाइंड्स होगा यू डोंट इवन आप डबल अप भी करोगे तो आप एवरेज स्टैक में पहुंचोगे ठीक है एंड यू डोंट प्ले हाई रोलर्स टू जस्ट मिन कैश क्योंकि आप कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाओगे सिर्फ मिन कैश पे करोगे क्योंकि मिन कैश इज अराउंड 1.7x ऑफ बाइन 1.8x ऑफ बाइन राइट तो आई डोंट रीबाय क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मेरा एज इतना ज्यादा है अगर मेरा एज इतना ज्यादा होगा कि मैं तो आपको. हाँ. हाँ मेरे लिए बहुत नेगेटिव आरओआई होगा कि अगर मैं 19 बिग ब्लाइंड्स लेके खेल रहा हूँ आई हैव टू प्ले अप तो 19 बिग ब्लाइंड्स अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो 50% टाइम्स मैं डबल अप कर लूंगा एंड फिर मैं मनूवर कर लूंगा 50% टाइम करेक्ट. में नहीं कर पाऊंगा तो जो तो 1.2 जो मेरा 15% आरओआई है वो मैंने ऐसे ही आधा गिरा दिया राइट क्योंकि 50% आरओआई मैंने यही गिरा दिया क्योंकि 50% टाइम्स में बर्स्ट हो जाऊंगा सिर्फ उस सिनेरियो में जी. तो दैट इज व्हाई आई डोंट रीबाय अगर अब देखिए अब काउंटर इंट्यूटिव लॉजिक है अगर 2200 का टूर्नामेंट है फॉर एग्जांपल मेवरिक का टूर्नामेंट है जिसमें फर्स्ट प्राइज इज मोर देन 100x ऑफ स्टार्टिंग बाय 3 लाख का 2.5 लाख का स्टार्टिंग है. अप टॉप है. हाँ. हाँ हाई रोलर्स में 16.5k का अगर बायन है तो अप टॉप ही 6 लाख होने वाला है दैट इज 40x लेकिन मेवरिक टूर्नामेंट अड्डा फॉर एग्जांपल 2200 में 15 लाख से अगर तो उसका अप टॉप 3 लाख जाने वाला है व्हिच इज 150x तो करेक्ट. उसमें करेक्ट. इट मेक्स मोर सेंस टू रीबाय 20 बिग ब्लाइंड्स के नीचे क्यों क्योंकि फील्ड भी आपको लाइटर मिलेगी मोर ओवर आपका इंसेंटिव भी बहुत ज्यादा है ऊपर जाने का राइट I 40 ब्लाइंड understand. Yeah. सो Perfect, बस perfect. So that's how you kind of go. So okay, so this is a good and a bad Sunday. And I mean wherever you take it, but आपने आपकी average buy-ins is how you see it. And then do you personally set any targets? Does it work that way or doesn't work that way? Do you all have like targets कि अरे break even तो करना ही है, अरे ये तो करना ही है, or do you analyze at the end of a week कि भाई week के ऊपर क्या गया मेरा, because ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? I don't think it's very difficult to do this कि आज ब्रेक इवन करना है क्योंकि it's not under your control. For example, आप का टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 है एग्जांपल आपने 6 टूर्नामेंट खेले ठीक है 5 ब्रेक हो गए एक लास्ट टूर्नामेंट चल रहा है उसमें आपने कैश कर लिया है 10 लोग बचे हैं आप 9th चल रहे हो ठीक है
9th चल रहे हो एंड 6th आओगे आप तो 50,000 मिलेगा आपको। तो आप इतना डिफिकल्ट स्पॉट है कि यू मतलब साइकोलॉजिकली यू माइट वांट टू ब्रेक इवन, बट आप 6th आने के लिए थोड़ा ना खेलोगे तब। आप अपना आपको आईसीएम कंसीडर करके खेलना पड़ेगा, आपको अपना स्टैक कंसीडर करके खेलना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते ना कि मैं अभी 9th या 8th चल रहा हूँ, मैं सिर्फ 6th आने तक के लिए बैठे रहता हूँ, उससे आप लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, राइट? सो आई डोंट थिंक इट हैपेंस। और वीकली I don't know people do it or not, I don't do it. I see it on a monthly basis, but and ऑनेस्टली इतना प्रॉब्लम मुझे हुआ नहीं है अभी डाउन स्विंग का, सो आई डोंट हैव टू अभी ऐसे एनालाइज नहीं करना हुआ है, क्योंकि मैं सो आई व्हाट आई आल्सो बिलीव इज कि जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा होगा, जैसे देयर आर डेज यू फील कि आप बहुत ही सही फ्लो में हो, एक हफ्ता बहुत सही फ्लो में खेल रहे हो, बट देयर आर आल्सो वीक्स जब आपको लग रहा है आप नहीं सही खेल रहे हो, इतना नहीं जा रहा है, तो आई टेक अ ब्रेक, आई डोंट प्ले वन वीक, मतलब आई टेक अ ब्रेक, आई गो टू वेकेशंस। तो उससे डबल होता है कि आप घूम भी लेते हो एंड आप एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से वापस आके खेलते हो, क्योंकि जब आप नहीं खेल रहे होते तो एक हफ्ते आपके दिमाग में पोकर चल रहा होता है थोड़ा सा, तो आप पॉजिटिव फाइनली सोचना चालू कर देते हो, तो फिर वापस से री मतलब एक्साइटमेंट रीग्रो हो जाता है कि यू आर लुकिंग टू कम बैक इनटू द रिंग अगेन एंड ट्राई दिस, गेटिंग टू इनटू इट। हाँ, टिल्ट करेक्ट। हो जाता है ब्रेक लेने से। या Got it. Perfect. Want to know? So this is about variance and a good and a bad Sunday. And honestly, ये सब का answers मुझे नहीं पता है. I'm asking you these things so that I like how do people understand? How do you guys think? Okay, let's move forward now. Let's come to normal life. आप ये बोलते हो कि अच्छा उसके पहले भी ये ले लेते हैं. आप ये साल में रिसर्च कर रहा था 50th हो in terms of total online earnings highest in terms of ये साल में कौन earnings में है, तो हाँ कैशेस में, तो योर 50th इन दैट, बट प्रॉफिट्स में जाते हो तो आप 16th हो, सो दैट जस्ट मीन्स कि आपका ये पूरा मनी मैनेजमेंट स्किल्स वेयर यू आर सेइंग कि मैं डोंट गो 11,000 प्लस में, मैं 20 बीबी के नीचे नहीं आता, सो ये सब व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू टेक केयर ऑफ जिसके कारण आपका ये नंबर ज्यादा है कि आपका कैशेस 50th है बट प्रॉफिट 16th है? इसके इसके डेफिनेटली दो फैक्टर हैं खाली। एक तो ये हो सकता है कि आई वाज ऑन अ गुड साइड ऑफ वेरिएंस दिस ईयर, ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा हूँ, क्योंकि मैं वॉल्यूम कम डाल रहा हूँ रिलेटिवली, इसलिए मेरे कैशेस कम ही रहेंगे बाकी लोगों से, प्रॉफिट बेटर हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा बेटर रिजल्ट आए इस बार। एंड वन रीजन इज पार्ट रीजन इज ऑब्वियसली बैंक रूल मैनेजमेंट दैट आई टोल्ड यू कि मैं एक लिमिट से ज्यादा रीबाय नहीं कर रहा हूँ। तो ऑल्सो मतलब एक और काउंटर इंटुइटिव लॉजिक है कि जब आप रीबाय नहीं कर रहे हो टूर्नामेंट में, राइट, तो आप वहां तो आरओआई अपना बेटर कर ही रहे हो उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में लॉन्ग रन में। एंड दूसरी चीज आप क्या कर रहे हो कि आप जैसे 4 की जगह पे 3 टेबल हो गई, तो कुछ परसेंटेज आपका ध्यान उन टेबल्स में ज्यादा बढ़ गया है। एक आपको मतलब देयर कैन बी वेरी माइन्यूट थिंग्स लाइक एक पर्टिकुलर बंदे का आपने बिहेवियर देख लिया जो आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जो आप 4 टेबल में आपका ध्यान नहीं जाता, you don't know, you would not be able to quantify that, but that is very qualitative, but that you have to give it x percentage कि आपकी जब टेबल्स कम होती है तो आपका कुछ x परसेंटेज तो ज्यादा आपका अटेंशन ज्यादा, टेंशन करेक्ट करेक्ट, आरओआई किस भी टर्म्स में आप बोल रहे हो बढ़ता है, so that makes it more profitable in some way, right? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई तो फील मेरे तो 3 टेबल में ही काम हो जाता है अगर मैं टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, तो आई कांट डू इट ओनली, सो या 100%। ओके, यू आल्सो स्पोक अबाउट ब्रैकेटिंग व्हिच आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि काफी रेग्स को ये काफी रेग्स हो या पोकर प्लेयर्स को ध्यान ही नहीं देते कि अगर आप 1100 का भी काफी बाइंस है आजकल जो 10 लाख रुपीस के टूर्नामेंट्स है, देन देयर आर 2000 रुपी टूर्नामेंट्स, 5000, 10,000, एंड यू सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रैकेट, राइट? सो डू यू डू दैट? आप वो एनालिसिस करते हो? बिकॉज़ अगेन आप इफ यू कैन एक्सप्लेन एवरीवन आल्सो व्हाट आई जस्ट सेड। Yeah, so what part just said is कि for example lot many poker players only think about कि हमारा ओवरऑल कैसा आरओआई है, हमारा जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट जस्ट टॉक्ड अबाउट कि मैं मेरा ओवरऑल कैशेस इतने हैं, ओवरऑल प्रॉफिट्स इतने हैं, ठीक है, व्हाट आई आल्सो फील इज कि लॉन्ग टर्म में यू शुड आल्सो सी कि आप किन टाइप के टूर्नामेंट्स में कैसा कर रहे हो। जैसे वेरी गुड रेग टोल्ड मी कि जो हायरोला टूर्नामेंट्स है स्पार्टन में या कोई भी हायरोला टूर्नामेंट्स है, लॉन्ग रन में उनमें बहुत ज्यादा आरओआई निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इतने ज्यादा रेग हेवी टूर्नामेंट्स है वो कि आपका आरओआई उसमें इतना अच्छा बनेगा ही नहीं, क्योंकि यू हैव टू फिनिश 6 7 कंसिस्टेंटली टू मेक तो अच्छा आरओआई बनाने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आप वो पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स में आप एक साल में या 6 महीने ड्यूरेशन में आपको कैसा प्रॉफिट परसेंटेज है। काउंटर इंट्यूटिवली जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट I'm not able to do very good in 1100 or 12 2200 tournament buy tournaments, so I don't know the specific reason. One reason is कि I think उसमें variance और ज्यादा है क्योंकि जो भी फील्ड बड़ी, हाँ
जो आप पढ़ते हो वहाँ पे कम अप्लाई हो रहा होता है, Okay. राइट? या फिर अगर मैं 5 टूर्नामेंट खेल रहा हूँ 16,000 20,000 10,000 बाय इन के, उसमें 8,000 ध्यान बाय इन कम के, है. हाँ, एंड एक टूर्नामेंट 1100 का खेल रहा हूँ, तो ध्यान कम तो है ही, लेकिन फील्ड भी बहुत डिफरेंट है। तो वो जो मैं बाकी टूर्नामेंट से फील्ड वाला लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लग रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं ओवर ब्लफ कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लोग कॉल कर रहे हैं, आई डोंट नो द रीजन। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ कि मैं मंडे को आयरन मैन होता है अड्डा का, राइट? तो आई सॉ कि मैंने अपने 20 वीक्स का आयरन मैन देखा, मैंने रियलाइज किया कि मेरा नेगेटिव आरओआई आ रहा है आयरन मैन में। तो आई हैव अ टेंडेंसी कि मैं उसमें रीबाय तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, या फिर रीबाय मैं उसकी लिमिट और बढ़ा दूंगा कि 25 या 30 बिग बाइंड से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं खेल पा रहा हूँ आयरन मैन, या लॉन्ग रन में मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ आयरन मैन में। तो आई वुड इन्वेस्ट लेस ऑन दोस टूर्नामेंट्स, एंड पॉसिबली काउंटर इंटुइटिवली कि जैसे मैंने देखा कि 7:30 बजे जो बाजी का डेली स्प्रिंट होता है, विच आई डिडंट यूज्ड टू प्ले एट ऑल, मुझे रियलाइज हो रहा है कि उसमें मैं बेटर कर रहा हूँ। तो मैं वो ज्यादा खेलूंगा। मतलब व्हाट मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि यू शुड आल्सो सी कि 6-6 महीने के पीरियड में, और व्हाटएवर यू वांट टू, कि मैं इन बाइंग के टूर्नामेंट्स में कैसा कर रहा हूँ, या किस बाइंग के टूर्नामेंट में कैसा कर रहा हूँ, तो टू इंप्रूव योर आरओआई, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज योर वर्क, इट इज योर बिजनेस बेसिकली। I just love this. जब आपने मुझे ये कहा था इसके बारे में, also I kind of thought कि यार ये ऐसा एनालिसिस कोई कर ही रहा है, तो आपके टूर्नामेंट्स डिवाइड करो कि आप खेलने का मन हमेशा आपको 10 लाख वाला इवेंट लाइक 10 लाख गारंटीड, आप जैसे अगर एवरेज प्लेयर्स है, they might want to get excited by playing 15 lakh guaranteed tournaments, 10 lakh guaranteed tournaments, but क्या पता आप 50,000 और 1 लाख वाले में हमेशा अगर आप टॉप 3 में फिनिश करो, मे बी यू नीड टू फोकस अ लॉट देयर एंड नॉट मिस दोस, बिकॉज़ उसमें भी अगर आप टॉप फिनिश करोगे, यू मेक 15-20,000 कंपेयर टू जस्ट नॉट कैशिंग इन द बिग वंस. एब्सोल्युटली, सो ब्रैकेट करना बहुत जरूरी है, इज व्हाट द पॉइंट. वेरी सिंपल टू डू आल्सो, कि आप रोज हाँ, खाली एक एक्सेल हाँ, में खाली बस बायन अमाउंट लिखो टूर्नामेंट का, एंड लिखो आपको कैश अमाउंट लिखो, जो श्योर. आप, एंड सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं, डेट, बायन, रिजल्ट। मतलब 100 दिन के बाद जब आपको सिर्फ एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, बायन बिलो 3000 या फिर बायन लेस देन 3000 टू 6000, देन यू कैन सी कि आपको उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल रिटर्न कितना है। ऑल्सो एक बुलेट्स वाला कॉलम भी हाँ, डेफिनेटली होना चाहिए। got it, awesome. Okay, like I have last couple of these things, like 2 3 questions. One is on the mindset bit, then I also want to cover the future bit, and what I want to cover first is on the family bit right now. Okay, so now as a poker player, what's happening on the besides poker, like agar aap in terms of are you like looking at the part of, okay, you want to get married and this that, and does poker play a part, and how do you think on those lines? So poker obviously plays a very big part on it. That, for example, I personally feel that when I was living in Mumbai, I my social life was better because people know about this more. People are more willing, and people are more accepting. But since I've moved to Jabalpur, I feel that there is rigidness, there is resistance here, because it's a social taboo. It's still social taboo. People have lost their shit that I studied from this college and did this, and ultimately I'm doing poker. पत्ते खेल रहा है. पत्ते खेल रहा है, yeah, you know what it is, right? So but I feel कि I love fighting these taboos. So I feel I'm one of those people कि लोग बोलते हैं ना कि कौन ही बात करेगा, तो I'm like कि मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा लोगों को. But yeah, so that social distance is happening right now, and that was one of the reasons कि मैं 1.5 months से थोड़ा कम ही पोकर रहा है मेरा, क्योंकि full shifting and transitioning was happening. But people are realizing, what I also feel is कि human मतलब बहुत herd mentality में चलते हैं, क्योंकि जो सब बोलते हैं वो लोग करते हैं बेसिकली, एंड लेकिन जब 1-to-1 आप लोगों को समझाओ ना, तो किसी का ऑप्शन नहीं होता, सुन के समझना ही होता है, क्योंकि 1-to-1 वो कितना लॉजिक को कैसे बीट कर लोगे एट द एंड ऑफ द डे, Sure. राइट? सो बाकी आई एम नॉट लुकिंग टू गेट मैरिड एनी टाइम सून, मे बी इन सम टाइम. It's getting difficult to meet people in our profession, right? So yeah. हाँ, so yeah, that was where I was actually heading towards, कि भाई ऐसा, do you feel आप ऐसा कुछ, like do you look at a partner who is somewhere in the poker industry or anything like that? But fair enough. Let's come to the part of mental aspect, mindset issues, because I think आप उस पे भी ध्यान देते हो. Do you do something special कि आप mindset और mental को ट्यून रखने में, बैलेंस रखने में क्या करते हो? I don't मतलब I don't do meditation yoga per se, right? But I for my mental well-being, I think I rely on my friends a lot. I spend time with them a lot, or I consciously do. For example, what I do is कि I make time कि 3 से 5, for example, दोपहर में मैं आज कुछ भी नहीं करूंगा. मतलब emptiness is also a thing I feel कि, for example, Wow.
you relax a lot कि मतलब कि I really like to do nothing also sometimes क्योंकि वो आपको clear कर देता है, थोड़ा energy दे देता है. That is my sort form of meditation basically. और nothing specific I do. Basically I just make sure कि जब 6 बज जाते हैं शाम के basically तो 1.5 uh, I'll do some exercise, I'll walk, I'll listen to songs, I'll chill with friends maybe. वो that time is for relaxation. Awesome. What's the last question is what is the future aspirations for Saransh, and what are you chasing? Like, what are you chasing? Honestly, I don't know what I'm chasing right now. I'm chasing. So basically, I found something which I'm liking, and I found something which I've realized that I'm good at. I can be good at. I can be better at. So what I'm chasing right now is this: that I want to explore that where can poker take me? Where do I stand? I don't know where do I stand right now. I want to reach a day where I feel that I've given it my 100% now, and this is where I stand right now. I don't know where I stand. I think it's very early, still a very early stage for me. I'm very new to this profession right now. So that is what that is. I want to challenge myself with poker. I want to see that how far can I challenge myself and how far can I go. But like everyone else, I want to be one of the best players in the country. But I want to see that actually till where can I go. Awesome, yeah. And I personally have interacted with you, and you've been really sweet always about it. So I think you're getting there, man. Definitely. Hopefully, it is Still going a to long happen way soon. to go, bro. हाँ तो ठीक है अपन बैठे ही है ना अपन जब Yeah. पॉडकास्ट 2 तभी करेंगे अपन Yeah. जब once you're What there. what else we are for? What else we here for? Yeah. So yes, sir. Thank you so much, Saransh. मजा आ गया. Thank you, Bart. People are going to like actually get a lot of different things that exactly what I wanted from the podcast. So thank you so much, man. Thank you. Thank you so much, Path. I think, and I also wanted to say I couldn't get a chance to say it, that I'm really loving the content that you're putting out there. I don't think there was anyone before that who was putting relatable content, right? Like for example, 10 things yesterday wala which you put, or Abhishek Goendi wala you put second wala point, or all the things that I've talked to you about. I think it's really good. It takes some heat off seeing those things. No, all you don't want to study all the time or look at sports. Sometimes you want to look at the funny part of poker too. So Yeah. it's fun, and I think it is also bringing the community together because people are commenting on your this thing, no, and people are tagging each other. So I think it's bringing the Yeah. community also together. So yeah. Awesome. Thank you, sir. ये अपना लास्ट पार्ट होना चाहिए सर हमेशा हर एक पॉडकास्ट के बाद. Hey, thank you so much, man. That was very sweet. Thank you so much, boss. Okay. Bye, bye, bye. Thank you. Bye.